aspirations and aspirations, but apprehensions too. Will the people like this program? Will men and women accept what we are trying to do to change the health, behavior, rights of women, engaging men? The reply we got was that 58 million people watched this. Served by your channel, so thank you very much. And there's one important announcement you were supposed to make, perhaps you'll make some other time, that we have been given to understand that Doordarshan, through all their languages, are going to dub this serial into various languages. And they will also, be putting it on the Kendra. So if you put all that together, that would be a huge thing. So I am making the commitment on behalf of you. Okay. So anyway, thank you very much for coming here. I wouldn't like to talk much about the television program because it's obvious whatever you have seen. I think what's most important and I'm most excited about is his association with Mard. Because I think it's extremely important to understand that if we are talking about मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर हम कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर हर महिला ये बोल सके और कह सके कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वो करने के लिए पुरुषों को साथ में कहना पड़ेगा कि आप जो भी करना चाहती हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ में हूँ. क्योंकि जब तक पुरुष वो नहीं कहेगा, मर्द ये नहीं कहेगा कि आप जो करना चाहती हैं मैं उसके साथ में हूं, तो ये जब तक मर्दों की जिम्मेदारी नहीं होगी तो भागीदारी कभी होगी नहीं. तो ये जो इनिशिएटिव है मर्द के साथ में, और ये जो टेलीविजन, ये मैं कुछ भी कर सकती हूं, ये सिर्फ एक टेलीविजन प्रोग्राम नहीं है, ये उससे बहुत बड़ी सोच है. टेलीविजन रेडियो तो उसका एक हिस्सा है, एक माध्यम है जिसके जरिए हम बहुत सारे लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सोच है. और उस सोच को लेकर जो आज मर्द के साथ में हमारा जो संबंध, जो एसोसिएशन रहा है, जो हमने शुरुआत की है, तो उसके बारे में मैं चाहता हूं कि मैं फरहान अख्तर से गुजारिश करूंगा कि वहाँ आए. मेरे लिए पर्सनली मैं अमूमन फरहान को ऐसे ही मिला करता हूं, लेकिन पहली बार मुझे मौका मिला है कि फरहान के साथ में एक इस सोच के साथ में जुड़ने का. तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं फरहान का कि उन्होंने ये हमारे साथ जो है जान जो कर रहे हैं उसके साथ में जुड़ने का उन्होंने ये फैसला लिया है. तो अब मैं फरहान से कहूंगा कि वो आए और अपनी जो बातें हैं आपके समक्ष रखें. आइए फरहान साहब. थैंक यू फिरोज. यस, आप कुछ भी कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम. Thank you, Feroz. Thank you, Mr. Thomas. And thank you, Poonam. Thank you. And just thank you, everyone, for being here. It really is an amazing time, really, that we're in, where there's such an emphasis across the world on what is going on in regard to gender issues. You know, fortunately, over this last couple of months, we have interacted a lot, not just with people within our own country and within our own city, but globally. And we are seeing that there is a lot of soul searching, a lot of searching for solutions that is going on, where people are coming together to form great opinion polls that can translate into some kind of action and that can translate into some kind of change in society. So it feels very, very wonderful. I feel very fortunate to be part of it. And honestly, to get messaging out through an entertainment format is really the way to do it. And especially when we want to talk to a young generation. It doesn't surprise me, you know, when you say that the calls that you get are predominantly between the ages of 18 and 24. That doesn't surprise me because these are the people who are wanting something different to happen now. These are the people who are restless for change. These are the people who do not want life to go on the way it was before them. And for them to get involved, this is a very healthy sign when you talk about the number of calls that you get. For me, as the founder of Mard, I've always believed and I've been propagating the same value system or the same opinion that Feroz and Poonam have shared here, that it is exceedingly important for men to get involved in finding solutions to problems that we for the longest time have considered only to be female problems. When you take the show, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, loosely translated, I can do anything or I can be anything. The fact is that it is possible, even in adversity, to be anything or to do anything that you want. But how much more wonderful would it be if you did not have social restrictions or did not have social limitations or social role playing that was thrust onto you.
and you had the support of your family and you had the support of your friends, so that you would enjoy your successes, so that you could share your successes with people who are important to you. And for that reason, I feel this show is a very important show. I'm very, very happy that season 1 has done as well as it's done. Hopefully when we come together, I'm here really more as an amplifier of your message, so that we can reach out to a lot more people, hopefully get a lot more men involved, not only in watching the show, but thinking about what the show stands for, so that we can arrive at further solutions. So thank you very, very much for having me, and I'm absolutely here to serve you in whichever way I can. Thank you. ऐसा कोई खास ऐसा कुछ हुआ नहीं है और लेडीज को आगे लाने की कोई जरूरत नहीं. लेडीज तो बहुत आगे निकल चुकी हैं. वो इंतजार कर रहे हैं कि मर्द कब इनकी तरफ आएंगे. तो जहां तक लेडीज के आगे बढ़ाने का तो सवाल इसमें है ही नहीं. सिर्फ ये था कि मैंने थोड़ा सा अपना एक रिसर्च किया और मैंने देखा कि अभी तक हमारी किसी भी फिल्म में या किसी भी पॉपुलर कल्चर में, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, हम कभी भी उनकी बर्थडे के लिए सेलिब्रेट नहीं करते हैं. हमारे यहाँ कभी पूजा नहीं होती है कि लड़की पैदा हो. हमारे यहाँ पूजा होती है, सब ये कहते हैं कि लड़का पैदा हो, लड़का पैदा हो. लड़की पैदा होने पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत निराशा हो जाती है लोगों को. तो मुझे लगा कि ये क्या है, ये कैसा है कि एक इतना बड़ा आपका जो भागीदार है उसकी पैदाइश की आपको खुशी नहीं है. जब आपको उसकी पैदाइश की खुशी नहीं है तो उसकी जिंदगी में आप क्या भागीदारी करेंगे. तो ये थोड़ा सा एक पर्सनल, जब मैंने इस चीज को देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत अहम बात है. अगर इसके साथ में जुड़ना है तो मैं जुड़ जाऊंगा. और फिर जैसे कहा कि साउथ अफ्रीका में देयर इज अ वंडरफुल प्रोग्राम कॉल्ड सोल सिटी, एंड व्हाट वाज वेरी वंडरफुल अबाउट सोल सिटी इज हाउ दे स्टार्टेड. दे सेड, look, the people, they were doctors, they said, look, we can, and particularly it happened in the township, and it's also happened at a time when they realized that South Africa was changing from the apartheid to a new regime of democracy there, and there were whole townships in South Africa, and the problem of AIDS was prevalent. The township which were, segregated and were deprived of basic medical education. And plus they realized that there are norms about beating up the woman. They would say that unless you beat the woman up, she won't straighten herself, and so on and so forth. So they said, look, we can come, they can come to us, we can repair them, and they will go back and again be beaten up. So to change the attitude and change the norms, it's extremely important that we use a very powerful medium, and that's where they used television. And then the results of that were so stunning that I thought we could take something out of there, got inspired from there, and then made this television program. फिरोज जी, ये बताइए कि अभी तो औरतें बहुत आगे निकल गई हैं जी, अब कितना आगे निकालना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए. उसकी कोई सीमा थोड़ी होती है आगे बढ़ने की. आगे बढ़ने की अपनी परिभाषा अलग अलग होती है. तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं. किसी आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है. आगे बढ़ना तो एक मुहावरा, एक बात करने की है. भागीदारी होनी चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए कि फिलहाल औरतों की स्थिति क्या है इस देश के अंदर, और हमारा उनकी तरफ रवैया क्या है. जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा. किसी भी समाज का जो डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि जीडीपी कितना बड़ा है और ये सब क्या है. सबसे पहले ये होता है कि क्या वहाँ जेंडर सेंसिटिविटी है, इक्वालिटी है, न्याय है, सामाजिक न्याय है, महिलाओं बच्चों की जो स्वास्थ्य है वो सही है, आपको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं. तो ये सारी चीजें, ये तो शुरुआत है, लंबी लड़ाई है, ये तो लंबा है ये सब कुछ. फरहान, मेरा सवाल आपसे है. फरहान, यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी है, जैसे कि एक्टर के मुकाबले एक्ट्रेस को कम पे किया जाता है, या फिर किसी भी जैसे